Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 53 for that topic human reproduction. Now we have been learning regarding the embryonic development in that human being that occurs inside the uterus of the mother or that female. Now we have seen that after zygote completed the cleavage, produce morula, morula produce blastula, and that blastula has undergone implantation. ब्लास्टोसिस्ट भी जिसे कहते हैं. इम्प्लांटेशन प्रक्रिया क्या होती है? That the anchorage of that embryo into the endometrium wall of the uterus. Now hereinafter the development occurs very fast. Gastrula embryo is formed which contains 3 germinal layer stage that I told you in the last lecture. Do refer that. And that 3 germinal layers are formed: ectoderm, outer, mesoderm, middle, endoderm, inner. Each of the germinal layer give rise to different kinds of the cells, tissues and organs. That cells are definitely called as stem cells, we know. And thus miniature organs start to develop in that embryo. And now that embryo will be known as fetus. अब उस embryo का shape भी बदल जाता है. अब ह्यूमन बीइंग के बालक के जैसा उसका शेप आया है, देखो, isn't it? And now the development occurs further in a very disciplined manner. A specific structure is developed there in the uterus for a temporary period, and that is known as placenta. ये placenta हम देखेंगे यहाँ पे. Developing placenta is here. ये placenta यहाँ पे develop हो रहा है, ये जो है, isn't it? And to that placenta, the attachments will be there. The placenta is formed in a very peculiar manner. ये placenta जो structure है, it is formed by fetus as well as mother together jointly. So which structure in the human female is formed from 2 individuals by the contribution of 2 individuals. 2 इंडिविजुअल अलग अलग है, 2 जीव जिसको हम कहते हैं लाइव्स अलग अलग है, पर उनके कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर बना है, एंड दैट मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म. अगर ऐसा पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या है? एम्ब्रियो नहीं है. एम्ब्रियो करेक्ट आंसर एक है प्लासेंटा. The contribution to the placenta is there, given by what? Given by the fetus as well as the mother. और वो temporary होता है. जब birth हो जाता है, then that placenta will be also removed. ये placenta form जब होता है, देखो अभी trophoblast नाम का जो layer था embryo को, so that trophoblast is now turned into the chorion. Chorion भी कहते हैं उसे अभी. That is a more protective structure formed there, and that chorion starts to give finger-like structures there. ये chorion जो है वो finger-like structures देता है, and that finger-like structures which are given by chorion are called as chorionic villi. They get interdigited or interlocked in the uterine tissue. Uterus का जो innermost wall है endometrium, उस टिश्यू में ये कोरियोनिक विला यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये ऐसे इंटरलॉकिंग करते हैं ऐसा. यानी ये समझो है पर्टिकुलरली सपोज दीज आर द कोरियोनिक विला डेवलप फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट एम्ब्रियो, और ये जो है वो एंडोमेट्रियम टिश्यू है, तो इसमें ये ऐसा इंटरलॉक हो जाता है. एंड इंटरलॉकिंग बिकम्स वेरी परमानेंट फिक्स देयर, रिमेंबर. That is covered by the endometrial tissue and all blood capillaries and all. And now a compact structure is formed there, and that is known as placenta. अब एक compact structure जो बनने जाता है दोनों की combination से, उसे placenta कहते हैं. That acts as a functional unit further throughout the pregnancy. ये placenta अगर देखेंगे आप जो बन गया है ऐसा interlocking के 2 tissues के, तो वो particularly it is just having the size of a small pan pizza. पैन पिज्जा जो खाते हैं आप, स्मॉल साइज का, थाली के साइज का,
disc like. So just it has got that type of the shape there, and that type of the swollen structure with a base case of that pizza base, just like that. A swollen structure is formed there, and that is there called as the placenta. Now placenta is very, very important structure there, temporary form in the uterus, and this placenta is jointly formed functional unit between fetus and maternal body that I have written here. Placenta supplies food and oxygen to the fetus. इस fetus को जो लगने वाला nutrition है, all that nutrients which are required there to the fetus, and that particular oxygen will be transported through that blood vessels, no doubt, which are enclosed in a cord-like structure known as umbilical cord. Umbilical cord, नाड़ जिसे हम कहते हैं, isn't it? एक tube like जैसा होता है structure. That umbilical cord is there, and with the help of that, it is connected to the placenta. At one end to the placenta, at other end it is connected to the, what do you say, that fetus. जहां पे वो आती है fetus में, वही पार्ट आगे चल के क्या बनता है हमारे बॉडी में, नेवल कहते हैं उसे, यानी AVEL, नेवल यानी नाभि का. नाभि का जो है, नाभि जो है हमारी, वहां पे वो कॉर्ड थी. बाद में बर्थ होने के बाद वो डिटैच हो जाती है, पर वो मार्क वहां पे रहता है. और देखो कितना डिसिप्लिन वर्क है वहां पे. वो बाद में ओपनिंग बंद हो जाता है, ऐसा बंद होता है कि बाहर से कुछ अंदर ना जा सके, अंदर से कुछ बाहर ना आ सके. Like that. That is navel, and that is umbilical cord. So it transfers the food and oxygen towards the fetus. Inside the fetal cell that get utilized for metabolism, energy formation, tissue formation, and then during that process, some nitrogenous waste must have been formed there. Excretory products are formed there. Then CO2 gas is also formed there. So that is also carried back, given from this umbilical artery to the placenta. But एक चीज ध्यान में रखने जैसी है, that these two kinds of the blood, maternal blood and that fetal blood, never get intermingled or never get mixed into each other. एक दूसरे में पूरे ऐसे मिक्स नहीं होते हैं, fetal blood और maternal blood. Just wall to wall diffusion capillaries का हो जाता है. The capillary wall are so thin, and the diffusion of that materials takes place there, nothing else. Fetal blood से वो जाता है CO2 and waste to the maternal blood. Maternal blood से आता है food and oxygen to the fetus. Purpose is served. Okay? तो ये umbilical cord का importance ध्यान में रखो. Now in the cavity of the uterus, uterus के cavity में एक protective shell बन जाता है, जिसे amnion कहते हैं. यानी एक पॉलीथीन बैग कैसा होता है, वैसा एक प्रोटेक्टिव शेल यहाँ पे बन गया है. They call it the amnion, and inside that amnion the cavity is there called the amniotic cavity, and that amniotic cavity is filled by the amniotic fluid. ये जो मैंने दिखाया है ब्लैक कलर में अंदर, ये जो है वो amniotic cavity है इसके अंदर की. ये amnion नाम का कवरिंग है प्रोटेक्टिव, और उसके अंदर है amniotic fluid that acts as a shock absorber. यानी मदर की जो बॉडी मूवमेंट हो रही है वो तो बंद थोड़ी होने वाली है. सो सपोज दैट मदर इज मेकिंग सम एक्सरसाइज, सम एक्सर्शन, वॉकिंग एंड ऑल, तो उसमें जो मैकेनिकल शॉक्स बैठने वाले हैं, द फीटस विल नॉट गेट एनी डैमेज बिकॉज ऑफ दैट. ओके, क्योंकि फीटस जो है उसे वो पूरा सराउंडिंग क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है दैट एब्सॉर्ब्स द शॉक्स. Then another important thing is that placenta can also act as a endocrine organ. और ये placental hormones जो बनाते हैं उनके नाम हमें याद रखना है. One is the human chorionic gonadotropin called as the HCG. The other is the human placental lactogen. Then estrogen and progestogens. So all these hormones are required for maintenance of pregnancy. अब ये प्रेगनेंसी जो मेंटेन करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है. दैट प्रेगनेंसी शुड नॉट गेट टर्मिनेटेड, इजंट इट. वो अगर उसे अच्छी तरह से एम्ब्रियो की ग्रोथ करनी है,
then constant supply of food, oxygen will be required there. Constant removal of the waste from that fetus will be required there. Then and then only the growth will take place. Otherwise not. तो वो केयर करने वाले हार्मोन्स कौन कौन है? HCG यानी ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, HPL यानी ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजीन, एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस. In the later stage of pregnancy, one more hormone is produced there, known as relaxin. Relaxin नाम का जो हार्मोन है, it is useful for relaxing the pelvic girdle muscles. That will help to increase the birth canal at the time of parturition or delivery. Delivery के टाइम, parturition के टाइम जो है वो birth canal को extend करने की जिम्मेदारी आ जाती है, and that for that purpose relaxin is going to stimulate. So one thing you have to remember for that particularly, ये जो hormones है HCG, HPL and relaxin, they are produced only and only during pregnancy in the human female. HCG, HPL लैक्टोजन का क्या फंक्शन होता है? मैमरी ग्लैंड्स में लैक्टेशन करना, मिल्क प्रोडक्शन करना. या देखो कितना प्लानिंग रहता है, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद उस बेबी को मिल्क लगेगा, तो वो प्रोडक्शन अलग जगह पे चल रहा है. कहाँ पे चल रहा है? मैमरी ग्लैंड्स में, ब्रेस्ट में, फीमेल के, मदर के. तो उसको भी स्टिमुलेट करना है. वो कौन स्टिमुलेट करता है? HPL, दैट पर्टिकुलरली ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजीन. तो ये जो हार्मोन्स है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, दे आर डेवलप ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो ये पूरी बात अच्छी तरह से समझ लो. ये ऑल पॉइंट्स आर टू बी आस्क्ड इन द MCQs. तो MCQ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. ओके, in the next lecture there we shall learn regarding the different trimesters of the pregnancy. So do like and share this video to your friend circle, and do subscribe to my biology, Katesar Biology and Katesar Biology Shorts channel. Thanks a lot.